अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अकेडमी। तो यहाँ पे हम सोशियोलॉजी 101 के लेसन वाइज एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। सो चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड भी होते हैं, हैंड आउट से होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन आपको दी जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी ही कोशिश की है कि सारी तरह के एमसीक्यूज आपको कवर करके दूं ताकि आपके एग्जाम की अच्छी तैयारी हो जाए। इसके अलावा सारी ही कोर्सेज अपडेट होते जा रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जा रहा है डे बाय डे। काफी ज्यादा कोर्सेज ऑलरेडी आपके साथ शेयर किए गए हैं, सो आप वो भी लेक्चर्स दे सकते हैं ताकि आपके एग्जाम अच्छे हो जाए। सो चलते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेसन 23 से हम यहाँ पे कवर करेंगे ताकि रिवीजन भी साथ साथ होता रहे। लेसन 23 में हमारे पास थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन है, तो यहाँ पे हमारे पास पहला एमसीक्यू से रिलेटेड है। मैंने लेसन वाइज कर दी ताकि आपको और ज्यादा आसानी हो जाए। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट डज द सिविलाइजेशन रेफर्स टू। सिविलाइजेशन जो है वो रेफर करती है हमारे पास, इसकी डेफिनेशन बेसिकली ये है, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड अडेप्टिंग द नॉर्म वैल्यूज बिलीव्स ऑफ सोसाइटी। तो ये बेसिकली हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ गई सोशलाइजेशन। व्हिच थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन एम्फसाइजेस द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन द डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ। तो ये हमारे पास है सिंबॉलिक इंटरेक्शन। सो ये हमारे पास एमसीक्यूज हमारे लिए शॉर्ट में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इसी तरह के शॉर्ट आपके पास क्वेश्चंस आते हैं वर्स में। सो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे ये क्वेश्चंस भी। ये एमसीक्यू Who held the concept of looking glass cell? So ये हमारे पास इन चारों में से कौन था? अगर आपने हैंडआउट्स पढ़े होंगे तो आपको डेफिनेटली आंसर आता होगा। ये है चार्ल्स हॉर्टन। सो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। According to the George, which part of the cell is responsible for the spontaneous and unpredictable behavior? ये हमारे पास है me, ठीक है। Which of the following stage is not a part of Paget stage of cognitive development? तो ये हमारे पास है post conventional stage। लेसन 24 में हमारे पास किस बारे में बात की गई थी? सोशल स्ट्रक्चर्स के बारे में। व्हाट इज द सोशल स्ट्रक्चर? पहला ही हमारे पास एमसीक्यूज इसी रिलेटेड है ताकि आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो जाए और अगर शॉर्ट में आपके पास कोई क्वेश्चन आए तो आपको आंसर आता हो। सो ये हमारे पास की डेफिनेशन आ गई। इसी तरह से द ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ social relationship and social institution that together compose society. Which of the following characteristic of social institution? कौन सी main characteristic है social institution की? तो ये है, they have established pattern of beliefs and behavior centered around the basic social needs. Which concept refers to the expectation of behavior within the particular role? तो ये हमारे पास है role, ठीक है। Example of an ascribed status, तो ये हमारे पास चारों ऑप्शंस हैं जिसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? डॉटर। द प्रोसेस बाय व्हिच द पीपल डिसेंड फ्रॉम द इम्पोर्टेंट सोशल रोल्स इज नोन एज रोल एग्जिट। लेसन 25 है हमारे पास, सोशल ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है यहाँ पे हमारे पास। व्हाट इज डिफाइन द सोशल ग्रुप? सोशल ग्रुप को क्या चीज डिफाइन करती है? टू और मोर पीपल हु आइडेंटिफाई एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। ये हमारे पास सोशल ग्रुप की डेफिनेशन आ गई। व्हिच टर्म डिस्क्राइब अ small social group whose member are share personal and lasting relationship। तो ये हमारे पास कौन सा है? प्राइमरी ग्रुप है। What is the characteristic of bureaucracy? तो ये हमारे पास कौन सा है? hierarchical स्ट्रक्चर को हमारे पास शो किया गया है। What sociologist is known for his analysis of bureaucracy? तो ये हमारे पास वेबर है। Which concept refers to the influence of group or individual behaviors and attitude? तो ये हमारे पास है ग्रुप डायनामिक्स में। लेसन 26 से हमारे पास सोशलाइजेशन एजेंट्स। Which of the following is concerned the primary agent of socializing? तो ये हमारे पास कौन सा है? फैमिली है, ठीक है। How do schools serve as an agent of socialization? तो ये हमारे पास है by transmitting knowledge and skill. Socialization has the most influence during the early childhood. तो ये भी हमारे पास कौन आता है? फैमिली। What is the role of the media play in socialization? तो ये हमारे पास है it reinforce sociological norms and values। Societal norms and values को फोर्स करता है, emphasize करता है। The following is an example of re-socialization। तो ये हमारे पास कौन सा है? all of the above। उसकी वजह क्या है? नंबर 1 में हमारे पास क्या है? लर्निंग न्यू लैंग्वेज। तो ये भी हमारे पास री सोशलाइजिंग के लिए हेल्पफुल है, एग्जाम्पल है एक तरह से, ठीक है। इसी तरह से स्टार्टिंग अ न्यू जॉब, तो वहाँ पे भी आपका सोशलाइजेशन जो है वो वहाँ से स्टार्ट होती है। और मूविंग टू अ न्यू कंट्री में भी हमारे पास डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज और डिफरेंट तरह के लोगों से इंटरेक्शन होता है। 27 में हमारे पास है डिवियंस एंड सोशल कंट्रोल। व्हाट इज डिवियंस? डिवियंस की हमारे पास डेफिनेशन क्या है? बिहेवियर दैट वायलेट सोसाइटिकल नॉर्म्स। किसी सोसाइटिकल नॉर्म से वायलेशन हमारे पास बिहेवियर में आना, उसको हम क्या कहते हैं?
deviance कहते हैं. Which theory suggested that deviance is learned through the interaction with others. हमारे पास differential association theory जो है ना इसको suggest करती है. This is the primary focus of labeling theory. Labeling theory का जो primary focus था वो क्या था? The reaction of society of deviance. ठीक है, deviance मैंने आपको ऊपर clear कर दिया है. किसी norm से violate करना behaviors के through. The following is an example of formal social societal कंट्रोल. तो ये हमारे पास क्या है? लीगल. प्रपोज द स्ट्रेन थ्योरी ऑफ डिवियंस. स्ट्रेन थ्योरी ऑफ डिवियंस किसने प्रपोज की थी? रॉबर्ट मैटन ने. लेसन 28 है हमारे पास फंक्शन ऑफ फैमिली. सो इसके एमसीक्यू देखते हैं. व्हाट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट ऑन फैमिली. तो ये हमारे पास क्या था? इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे देखते हैं जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेगी. The family performs several vital functions and it is considered the backbone of the society. Next हमारे पास है what does the incest taboo regulate or marriage the certain kin is one of the social reason of incest taboo. तो ये हमारे पास क्या है? Minimize sexual competition within the families. What is the role of the family in the socialization of children? तो ये हमारे पास क्या है? The family is the first and the most influential setting of socialization. Which function of the family is being challenged in a Western society with the number of single women having children? तो ये हमारे पास क्या है? रिप्रोडक्शन में आ गया. लेसन 29 है किनशिप एंड रीसन. तो ये हमारे पास क्या है? What is kinship? तो ये kinship की हमारे पास definition भी आ गई है. System of relation based on a marriage or a blood relations. What is the primary function of kinship system? तो इसका primary function क्या है? To define the people's right and obligations towards each other. What is the patrilineal descent? Patrilineal descent का हमारे पास क्या है? Descent traced through the father line. This type of kinship system is practiced with the individuals are related if they have a common ancestor. ये हमारे पास lineal kinship system आ गया. What is the matrilocal residence? तो ये हमारे पास क्या है? Married couple living with a wife's relation. 30 आ गया marriage and family patterns. What is the monogamy? Monogamy क्या है? Monogamy की definition भी आ गई हमारे पास. Married to one spouse at a time. What is the term of marriage pattern where the individual has a multiple spouse? हमारे पास polygamy आ गया. इसकी definition. What is an extended family? Extended family की definition क्या है? A family that include relatives beyond the nuclear family. What is endogamy? Endogamy क्या है? Marriage within one social group. What is the primary function of marriage? Most societies. तो ये हमारे पास क्या है? To regulate sexual access and reproduction. Lesson 31 gender socialization आ गया. What does the gender socialization refers to? ये हमारे पास क्या है? The process by which the individual learn gender roles. What is the term socially construct role and behaviors considered appropriate for men and women? तो ये हमारे पास gender roles. How gender roles typically established in societies through the socialization और cultural norms के through हमारे पास gender roles typically generate होते हैं, बनते हैं. What does the term masculinities refers to? Various socially construct standard for male behavior. तो ये हमारे पास की definition आ गई. In that case अगर ये short में भी आई तो आप इसको लिख सकते हैं. What concept does suggest the gender role vary across the culture and times? तो ये हमारे पास क्या है? Social construction of gender. Lesson 32 हमारे पास क्या है? Gender stratification. What is gender stratification? तो ये हमारे पास क्या होता है? The hierarchical ranking of gender in societies. Which sociological perspective focus on how gender stratification benefits society as a whole? ये हमारे पास functionist का perspective आ गया. Functionist की theory भी हमने पहले देखी थी. Which term describe a society man dominate over women? तो ये हमारे पास again party hierarchy आ गया. What concept explain how gender roles contribute to social stability? Structured functionalism यहाँ पे apply होता है इसका concept. What is the term that invisible barrier that prevent the women from the reaching higher position in organization? तो ये हमारे पास क्या आ गया? Glass ceiling. ठीक है. Lesson 33 function of schooling आ गया. What is one of the manifest function of schooling? सबसे ज्यादा manifesting किसमें है? Socializing the young into the norms and values of societies. What is the latent function of schooling? What is the latent function of schooling? तो latent function of schooling क्या है हमारे पास? Creating a social network and relationship. What is the primary role of education in societies according to the functionist? To maintain the social stability and coherence. Which term describe the process of learning societal norms and values through the schooling? Hidden circle. What is the function of standard testing in education? Is and compares students' academic performance. Lesson 34 Environment and Society. Which of the following best describe the term biodiversity? The
the variety of plants and animal species in a particular habitat. What is the primary focus of social conflict theories regarding environmental problems? So ये हमारे पास की definition आ गई. Environmental problems are result of societal class structure and global hierarchy. Which term describe the pattern by which environmental hazards are greatest in proximity to poor people and minorities? Environmental racism. How do humans view the environment as a limitless resource? What is the concept of sustainable society and the world? Society that uses resource in a way that does not harm the environment for future generations. Lesson 35, Population Study and its Significance. What does accrued birth rate CBR measure? तो इसका हमने फॉर्मूला भी देखा था लास्ट एमसीक्यू जो हमने सॉल्व किए थे. तो ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ लिव birth per year यानी कि एक specific year की birth per thousand of the population. What does fertility refers in a demographic term? The number of lives born children the average woman has. This term describes the number of deaths as per thousand of population per year. ये हमारे पास crude death rate का फॉर्मूला भी आ गया और डेफिनेशन भी आ गई. What is the infant mortality rate? Infant mortality rate हमारे पास क्या है, the number of children who die before the reaching the age of 1 year per thousand lives birth. What does a life expectancy measure? The number of years an average person can expect to live. Urbanization or population distribution. Lesson 36. 36 हमारे पास ही related है. The increase in the proportion of living in urban areas. What is the significant consequence of urbanization? The growth of slums and informal settlement. This term describes the process of population redistribution migration. What is a majestic city? तो ये हमारे पास क्या है, a city with a population of one or more than 10 million. Which factor is commonly associated with the urbanization? Increased economic opportunities. Lesson 37, Social institution and economy. What is the primary factor of economy considered with agriculture? Which sector of economy focus on the transformation for a raw material into a finished product? Secondary sector. What is the primary feature of tertiary sector? Providing services. Which economic system is characterized by the private ownership and free market? Capitalism. In which economic system does the government make all the production decisions? Command economy. Lesson 38, Social institution and politics. What type of government is ruled by a single individual? Autocracy. Which form of government allows the citizen to vote directly on a law and policies? Direct democracy. In which system of government do elected officials represent the interest of the people? Representative democracy. What is the key characteristic of totalitarianism regime? Extensive control over a public and private life. Which term describes the division of power between the national and regional governments? Federalism. Lesson 39, Social institutions, religion. Socialist is known for his study on Protestantic ethics and spirit of capitalism. Max Weber, which term refers to the unified system of beliefs and practices regarding the scared thing? Religion. Which does the secularization refers? The decline in religion influence. What is the key function of religion according to the Emily? Creating social solidarity. Which concept refers to the religion organization that is well integrated into the large society? Ecclesia. Lesson 40, Social institution education. Which term refers to the hidden curriculum in a school? Informal curriculum. Which theory suggests that education serves as a means of maintaining social inequality? Conflict theory. What is the main purpose of formal education? Socialization. Which concept refers to the process by which students are categorized into a different group based on the ability tracking? What is the term for the knowledge and skill learned into those that are valued by employers? Human capital. Lesson 41, Population and urbanization. What does the term demography refers to? Study of population. Which theory suggests that the population growth will outpace food production? Malthussen's theory. What is the primary focus of urban sociology? Urban life and structure. Which concept refers to the migration of people from rural areas of cities? Urbanization. What does the term carrying capacity refers to the demography? A maximum population size environment can sustain. Lesson 42,
environment and society refers to the variety of life and its processes. Biodiversity. What is the primary focus on environmental sociology? Human interaction with environment. Which concept suggests that the environmental hazards disproportionately also disproportionality affect the poor communities? Environmental racism. What does the term sustainable development refers to? Development without environmental degradation. Which term refers to the practice of using resource more efficiently, reduce waste. Conservation. Lesson 43. Social change. What is the primary focus of social change? Dynamic processes. Which theory emphasizes the role of technology in the social change? Evolutionary theory. Which term refers to the significant alteration over the time in behavior pattern and cultural values? Social change. Next remark was, what is the term of collective effort to bring about the social change? Social movement. Which factor is often on catalyst for social change? तो ये हमारे पास क्या है? Technological innovation. Lesson 44. Collective behaviors and social movement. What is the term for spontaneous unstructured social behavior? तो ये हमारे पास है collective behavior. Which theory explains the social movement as rising relative deprivation theory? What does the crowd refer to in a sociology? Large group of people with no purpose. Which concept refers to the social movement aiming to create a complete change in a society? Evolutionary movement. What is the characteristic of social movement? Organized effort. Lesson 45. Globalization and its implication. Which term refers to increase the interconnectedness societies across the globe? Globalization. What is the primary driver of economic globalization? Trade liberalism. Which concept refers to the spread of a cultural element from one society to another? Cultural diffusion. Which theory suggests that globalization leads to the homogeneous of the world culture? Cultural convergence theory. What is the major criticism of globalization? It can lead to the exploitation of developing countries. तो ये थी आज की मेरी MCQs. आई होप कि आपको इस कोर्स ने इस वीडियो ने हेल्प किया होगा एग्जाम्स के लिए. उसके अलावा भी अगर VU का कोर्स आप देखना चाहते हैं, MCQs वगैरह सीखना चाहते हैं, कुछ आंसर देखना चाहते हैं, पास्ट पेपर देखना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. काफी ज्यादा कोर्सेज में आ चुके हैं और डे बाय डे अपडेट हो रहे हैं. सो आई रियली होप सो कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी. इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. टिल देन अल्लाह हाफिज.